Okay, so ready everyone, screen is visible and I'm perfectly audible, correct? Okay, Bismillah Rahman Rahim. Let's get started with the very first question. Today we'll do inshallah the full version of the entire past paper worksheet, extremely important from Electro. Today is Tuesday, we have Wednesday and Thursday हम आज हम P2 करेंगे, theory करेंगे, कल भी theory करेंगे, and then day after tomorrow we'll do MCQs, and then on Saturday you will be tested with the understanding of electrochemistry. So let's get started. Understanding and reading the full thing of the question is extremely important. Electroplating, it's a process through which you coat one metal over the other metal using the current. Electroplating steel object with silver involves three steps. So in the first step, coating of copper is applied to an object. Step two, a coating of nickel is applied to the object, and then step three, coating of sulfur is applied to the subject. Okay. So basically हम कर ये रहे हैं कि we are coating, you know, सिल्वर का कोट कर रहे हैं किसके साथ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टील ऑब्जेक्ट विद सिल्वर, लेकिन वो थ्री स्टेप्स में होती है. इन स्टेप वन कॉपर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, फिर स्टेप टू में निकल करते हैं, फिर स्टेप थ्री में इवेंचुअली हम उसके ऊपर सिल्वर का कोट करते हैं. बट क्वेश्चन क्या है, a diagram of the apparatus for step one is shown. What exactly are we doing in step one? In step one, coating of copper on the object. Imagine this is the steel object. तो जिसके ऊपर कोटिंग करनी है that has to be cathode. This is exactly what we studied yesterday. जिसकी कोटिंग करनी है that should be your anode. So in step one, we are coating copper on the surface of the object. Now copper has to be anode, and whatever जो भी नीचे electrolyte है, it should be aqueous salt of the same metal. Aqueous salt, वो नाइट्रेट ले लो, मैंने कहा था 99% हम नाइट्रेट लेंगे, इसने सल्फेट लिया हुआ है, जिस तरह कल आपने कहा था कि सल्फेट ले सकते हैं. The chemical process takes place on the surface of the object is this. I mean, हो क्या रहा है कि copper ions यहाँ से आ रहे हैं. We know that copper ions यहाँ से आएंगे नीचे, and those very copper ions will get deposit on the surface of the object. तो इस process को हम क्या कहेंगे, reduction. Explain whether the process is oxidation or reduction. Since this process happens at cathode, तो cathode पे कौन सा process होता है, cathode पे gain of electron होता है, उसको हम क्या कहते हैं, reduction. So 1 mark for reduction and explanation. Reduction as copper ions gains 2 electron. Gain of electron is reduction. पहले आपने फिर उसको बताने हैं कि भाई gain of electron reduction होता है. So gain of electrons is reduction, right? This was extremely basic. Explain why the concentration of copper ions in the electrolyte remains constant throughout the step one. So देखो यहाँ पे हमारे पास copper anode है और नीचे हमारे पास copper ions हैं. तो जो नीचे हमारे पास copper ions हैं aqueous form में, listen everyone. So जो हमारे पास copper ions हैं बेटे aqueous form में, वो तो initially यहाँ पे हैं ही हैं. Let's say आपके पास initial copper ion की concentration थी in the electrolyte, it was 1.00 mole per decimeter cube, because mole per decimeter cube is the unit of concentration. Since the copper ions that are being deposited on the surface of this object are not the presence here in the electrolyte, these are the copper ions which are actually oxidized, which are produced from anode, and those very copper ion gets deposited. So वो जो हमारे actual electrolyte होगा, that it will remain intact, remain unchanged throughout the electrolysis. So explain why concentration of copper ion remains constant. क्यों होती है? As the copper anode oxidizes to copper ions, तो जो एनोड है वो असल में oxidizes to copper ions, and these ions gets deposits. So electrolyte remains unchanged. भाई इलेक्ट्रोलाइट को तो कुछ भी नहीं हुआ, इलेक्ट्रोलाइट तो remain unchanged. कैसे remain unchanged? As I said कि जो anode है that is made up of copper. The anode itself loses electron to become copper ions, and those very copper ions get deposited on the surface of cathode. Very important question for 2 marks. So I hope this makes sense, everyone, for 3 marks. Yes? Yes. Yes, sir. Ahmad, you're back in the class.
Good to see you, Ahmed. Zoya, let me take round of the class. Meanwhile, let's. Okay. The next question is give two changes which would be needed in order to quote nickel onto the object 2. तो क्या changes करेंगे? अगर हमने nickel का quote करना है on the same object, so instead of copper, we use nickel anode. एक तो ये change की. What other possible change would you make when you use nickel instead of copper? What could possibly be the second change, Haifa? शाबाश. सर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम लोग कॉपर सॉरी निकल ऐड कर देंगे. निकल तो बेटा जो भी मैंने कहा था एनोड भी उसी मेटल का लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइट शुड बी द एक्वस सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल. तो यहाँ पे भी आप निकल सल्फेट ले लोगे, निकल नाइट्रेट ले लोगे. So give two changes. One is use nickel anode and change two is electrolyte would be aqueous nickel nitrate or nickel sulfate because only 3 sulfates are insoluble LCD. Make sense, everyone? Okay. So question number 2, I'm giving you 3 minutes to answer all these 5 more questions. Read the entire statement. Let me read the question for you. Hydrogen can be manufactured by the electrolysis. We know hydrogen is every single time it is a product at cathode. Whenever you have, dilute solution. The electrolyte is concentrated aqueous sodium chloride. So we have not simple but concentrated aqueous NaCl. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके आयंस लिख लेंगे. NaCl में होगा क्या? You will get Na ions, Cl ions, hydrogen ions and hydroxide ion. नाइल यही कुछ होगा. The product of electrolysis are hydrogen, chlorine and sodium hydroxide. Define the term electrolysis. Substance used as inert electrode. Half equation at where the hydrogen is produced, where hydrogen is produced in the electrolytic cell. Very easy. I think 2 minutes में आप कर सकते हैं. Question आपको समझ आ गया है? Please answer the question, everyone. Yes, please. Sir, done. Excellent. Samin bete, Amna, Haifa. डन सर. केमिस्ट्री में आज रिजल्ट आया है आपके सीनियर्स का. ऑफ कोर्स आप लोगों ने जिन लोगों ने सामने पार्सेंटेज दिया हुआ होगा, वो बच्चे जो कहते थे कि केमिस्ट्री होनी नहीं है, मॉक तक वो फेलियर थे. आई मीन दे वर स्ट्रगलिंग विद अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक कांसेप्ट. ये तो हम हार्डर वर्जन कर रहे हैं ना. इलेक्ट्रोलिसिस इज अ चैप्टर व्हिच इज नॉट कंसिडर्ड एज अ इजी चैप्टर. वो लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी स्ट्रगल कर रहे थे. पीपल वर स्ट्रगलिंग, आई रिमेंबर, विद एयर एंड वाटर इवन. सो दे अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज टू गेट ए और ए स्टार्स. सो इफ सम ऑफ यू, आपको किसी को लगता है कि ये कोई भी सब्जेक्ट हार्ड है या कोई मुश्किल है या आपको प्रॉब्लम है, अभी आपके पास इनफ टाइम है. विद डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन आप उसको अचीव कर सकते हैं. जो भी सब्जेक्ट है, वेदर इट इज केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंसेज और बायोलॉजी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जो भी है. This is the right time to make a plan, a perfect plan, and keep check on your plan. कि जो हमने बनाया है उसको हम perfectly follow कर रहे हैं. जो हम daily 40 मिनट्स यहाँ पे लगा रहे हैं, इसकी कोई प्रोडक्टिविटी आ रही है? अगर आ रही है तो इसका बेनिफिट है. अगर आप सिर्फ क्लास अटेंड की है या कोई भी क्लास जो आप स्कूल में ले रहे हैं, आप अकेडमीज ले रहे हैं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, दैट क्लास इज नॉट प्रोडक्टिव, इसका मतलब देयर इज सम फॉल्ट. इसलिए आप जो भी कर रहे हैं उसका कोई कुछ ना कुछ बेनिफिट हमें आउटपुट मिलनी चाहिए. वो होगी तब जब हम अपना फोकस मेंटेन रखेंगे. व्हेन वी हैव सेल फोन, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर दोस सोशल साइट्स आर, हमारा फोकस उस तरफ है तो वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम और फिर रिग्रेट होता है और फिर उसके रिग्रेट के अलावा आप कर भी कुछ नहीं सकते. इसलिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड एवरी वन ऑफ यू, no subject is hard, nothing is easy. As long as you're regular, you're punctual, you're with strong dedication and discipline, you're putting effort, so there is no point that you not score a star. This is as easy subject as anything, I can tell you. Being a teacher of this subject, I can tell you this is the most easiest. सबसे ज्यादा जो predictable paper होगा मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह few days before, जब हम practice कर लेंगे everything. But उसके लिए I need your regularity, punctuality, focus and little bit responsibility. Not more than 20 minutes a day, not even 21st minute.
but those 20 minutes should be with focus, right? So electrolysis is a process for 2 marks. बेटे marks देखने 2 marks. A process in which molten or aqueous ionic compound is ionized. Molten or aqueous ionic compound is ionized. How do we ionize the molten or aqueous compound? Using current, using electricity. So you'll get 2 marks. A process in which ionic compound is ionized using current. For current, we have 1. Name a substance that can be used as inert electrode. तो ये तो गला फाड़ फाड़ के मैंने बताया हुआ है. You can use 2 electrodes as inert. One is graphite or platinum. But normally हम graphite ही use करते हैं. Graphite किस चीज का बना हुआ है? Made up of carbon. Write the ionic half equation in which hydrogen gas is produced. We all know that hydrogen gas अगर produce होनी है तो it should be H2 gas. So 2 hydrogen ions, both except 1 electron. So this is the ionic half equation. I think ये तो हमने याद ही की हुई है ना. ऐसा ही है ना. Where is hydrogen produced as? Hydrogen के ऊपर क्या charge है? What is the charge on hydrogen ion? What charge does it have? Plus. तो cation है. तो cation कहाँ produce होता है? Cation always attracted toward cathode. So hydrogen gas will be produced at cathode. Make sense, everyone? यही लिखा था सबने for 5 marks. So if you are making some sense, if these questions are actually making some sense, इसका मतलब we did some good thing in the last few days. Or even the past paper question itself is a new learning. By the way, हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ा है, मैंने कोई बिल्कुल आपको किताबी बातें नहीं बताई हैं. We did exactly according to the syllabus, according to the रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनर कि एग्जामिनर आपको टेस्ट कैसे करेगा. देखो ऐसे ही करेगा. कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे. आई थिंक सब कुछ ही हमने पढ़ा हुआ है. एग्जैक्टली 100% सेम सारी चीजें पढ़ी हुई हैं. कल हमने ये सब कुछ पढ़ा था कि हाउ कैन यू कैन इलेक्ट्रोप्लेट, कैसे एनोड लेंगे, क्या कैथोड लेंगे, कौन इलेक्ट्रोलाइट लेंगे. एग्जैक्टली द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग हियर एट. आई थिंक ये तो हमने किया था क्वेश्चन. आई डोंट रिमेंबर. चलो कर लेते हैं ना अभी. Copper 2 sulfate was electrolyte using the apparatus shown. So we have copper wire, carbon anode, carbon. So these are inert electrodes, right? Bubbles of gas and copper solution here. So we have copper 2 sulfate, and we know that the formula of copper 2 sulfate is CuSO4, and it is aqueous. When you will pass a current, it will produce copper 2 ions, the sulfate ions, it will produce H ions and hydroxide ions. These are the ions that it will have. ये तो skill अब सबको समझ आ गई है कि सबसे बेसिक स्किल जो आपको मैंने सिखाई है वो ये है कि how would you predict the ions present in the solution. If you know how to predict the ions, it would be easy for you to predict the ionic half equation and the product at respective electrode. A gas would form at anode. Now we know that anode attracts anions. तो इनमें से कौन सा anion will win the race? Always hydroxide. If hydroxide will win the race, तो ये क्या बनाएगा? कौन सी गैस बनाएगा? It will form oxygen. Excellent. Now I know आप सबको आंसर आते हैं माशाल्लाह. So how you should write the equation? कैसे equation लिखते हैं? लिखे ना जरा anode की equation. How the hydroxide ion gets oxidized to give you anode. I mean oxygen. Anode will attract hydroxide ion. You have less than 20 seconds to write how the hydroxide ion gets oxidized to give 2 actual product, and of course the third one are the subatomic particles. 10 seconds. लिख दिया सबने? Okay. I hope I'm audible. Signal slow आ रहे हैं. Okay. तो कैसे होता है? 4 of the hydroxide ions, याद की भी हमने, produces 1 oxygen, 2 water and 4 electrons. तो एक्चुअल मैंने कहा था जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन गैस है, 2 वाटर लिक्विड है, एंड दिस इज आल्सो एक्वस. द एक्चुअल प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन गैस, बट अगर वो सेकंड प्रोडक्ट भी पूछता है तो वाटर लिख दो, थर्ड प्रोडक्ट पूछता है इलेक्ट्रॉन्स लिख दो. यही लिखा सबने? ऐसे ही लिखा सबने भाई? एक्सेलेंट. तो हाउ डू वी टेस्ट द ऑक्सीजन गैस? ऑक्सीजन इज द गैस विच हेल्प इन कंबशन. आपके पास एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी तो बेटर कंबशन होगी. तो आप हाउ डू वी टेस्ट ऑक्सीजन? अप्लाई the glowing splint. Sir, the splint lights.
आई मीन रीलाइट्स। तो अभी हम करेंगे वैसे एनालिसिस वाले चैप्टर में, बट यहाँ पे आ गया तो कर लेते हैं। अप्लाई द ग्लोइंग स्प्लिट नियर द ओपनिंग ऑफ द गैस, इट रीलाइट्स। क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो और ज्यादा ग्लो करेगा। रिजल्ट ऑफ, अच्छा ये रीलाइट इसका रिजल्ट है, ठीक है। सिर्फ उसने यहाँ पे टेस्ट पूछा था, रिजल्ट क्या है, इट रीलाइट्स। नाउ during the electrolysis of electricity passes through the copper 2 sulfate solution. Solid copper 2 sulfate does not, cannot be, मेरा ख्याल ये हमने किया था कि explain both of these statements. So when you have copper 2 sulfate solution, that means solution में basically we're talking about copper sulfate aqueous, and the solid thing is simply CuSO4 solid. So in copper sulfate solid, oppositely charged ions are tightly packed. Charged ions are tightly packed. ये तो यार इतनी बार बता दिया आपको. Cannot move, so therefore cannot conduct current. भाई समझ आ गई सबको? Yes, Aipa. And in aqueous form, oppositely charged ions are free to move. Yes, Aipa, bete, I'm listening. So I was going to ask if instead of the oppositely charged ions, if I write atoms, will they deduct the marks? No, that's yes. We in copper sulfate we don't have atoms. By copper यहाँ पे atom तो नहीं है. Copper is an ion with 2 plus charge. Sulfate is an ion with 2 plus charge. So basically they are ions. They are still ions, but with they are tightly packed and solid. In aqueous form, they are also ions, but they can move. So if you write atom, it will be a wrong, because it will be a wrong answer, because these are not ions. These are these are not atoms. These are ions. I hope this makes sense. So oppositely charged ions can move, so can conduct electricity. Correct? You'll get 3 marks. Okay. So part C of the same question is the electrolysis is repeated with copper electrode. देखो exactly कल चीज की थी हमने. We can do electrolysis of copper 2 sulfate with graphite electrode or with copper electrode. So now we are using copper electrode instead of graphite in place of carbon electrode. The ionic equation for ये exactly anode की यही की थी या cathode की यही की थी. Which species is reduced during electrolysis? Explain your answer for 2 marks. तो भाई reduce होता है, reduction होती है acceptance of gain of electron. तो I think ये यहाँ पे reduction हो रही है. So copper ions are reduced. To copper. Because copper ions are reduced to copper solid as gain of electron is reduction. As gain of electron is reduction. Am I audible? Yes, sir. Yes, you're sir. audible. I don't know what went wrong with my mic. Suddenly stopped working. So electrons is reduction. So here at cathode, copper ions gains 2 electrons. A perfect answer for 2 marks, right? Okay. The masses of copper anode, copper electrode changes during the electrolysis. So I hope you can actually connect this statement with yesterday's lesson. As I mentioned, we did exactly the same thing part of the syllabus, and examiner is going to test you with. State how and explain why. So 2 different statements, how, and we need to answer why. The masses of 2 anode, 2 copper electrode. पहले हम how का आंसर देते हैं. Anode डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? एनोड का मास डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? Decrease. Decreases. Anode decreases in size. ये तो how का आंसर होगा. Anode decreases as the electrolysis proceeds. भाई आपको आती है केमिस्ट्री, किसने कहा नहीं आती? कोई मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल आसान है as long as you know regular in doing the work. So anode decreases. Now let's answer why. Why thing. So as anode is made up of copper, so it oxidizes
to copper ions. It oxidizes to copper ions and gets smaller in size. So cathode increases. तो हाउ का आंसर हो गया, क्यों इंक्रीज हुआ? कॉपर आयंस फ्रॉम एनोड attracted toward cathode and gets reduced. देखो reduce हुए ना when they gain electron and get reduced at cathode to form solid copper deposits. तो size क्या होगा? Increase हो जाएगा. Make sense everyone? So this is how you can answer any question. No question is hard, no question is easy. अगर आपको उसका concept है, if you know the logic, I mean वो आपके लिए is just another English. Just write 3-4 sentences about this, and of course you will get the full thing of that. So you can see the evidence of that. ये मैंने question थोड़े generally different और hard question copy किए हुए from while I was just working on this worksheet. So you can see that these questions are actually making some sense because we can connect this to every single class. I think we had detailed discussion on every single chapter. I mean, every single topic of this chapter, starting with what electrolysis is, what is electrochemical cell, the composition of the electrochemical cell, molten electrolysis, aqueous salt electrolysis, concentrated electrolysis with inert electrode, with reactive electrode, how to do electroplating, and lastly, how to purify the metal. So you all have the concept, right? So we can answer those questions. Explain why during electrolysis the color of copper sulfate does not changes. It is because ये बिल्कुल वही same question है जो उसने पहले पूछा था कि why the concentration of copper ions remains constant. It is exactly the same question. कि अगर copper ions कम होते तो उसका color change होता. अब copper ions तो कम हो ही नहीं रहे. क्यों नहीं कम हो रहे? Because copper ions तो एनोड से आ रहे हैं, वो तो इलेक्ट्रोलाइट में तो नहीं जा रहे हैं. So as the copper ions from the electrolyte, the copper ions are coming from anode and gets reduced at cathode. So electrolyte remains unchanged. भाई इलेक्ट्रोलाइट को तो कुछ कहा ही नहीं हमने. So does the color. उसका कलर भी चेंज नहीं होता क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज नहीं हुई. इलेक्ट्रोलाइट को तो हमने कुछ कहा ही नहीं. These are the copper ions from anode. They are being deposited at cathode, and that's how they are going to fix the cathode size में बढ़ता जाएगा, एनोड बड़ा होता जाएगा. Now, अच्छा ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम. ये हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो हम उसको कर लेते हैं. Aluminum is a very important metal. Thank you. Aluminum is extracted from its ore called bauxite, part of the syllabus. The formula of bauxite is Al2O3. You must know this. I mean, this is जिस तरह iron का जो ore है, that is hematite, Fe2O3. Similarly, ore of aluminum is part of our syllabus. So we can extract the aluminum from its oxide using a process called electrolysis. We have lot of metals. I think मैंने reactivity series आपको करवाई है या नहीं कराई, I don't remember. But we know that there is a series called electrochemical series, and that starts with potassium, sodium, calcium, magnesium, and aluminum. So the metals present above carbon in the reactivity series. If you want to extract these metals from their ore, there is no other method except electrolysis. So if you want to extract, for example, aluminum from aluminum oxide, and you react it with carbon, do you think carbon can displace aluminum from its oxide? Can carbon displace? Yes or no? Yes. No, because carbon is less reactive. Aluminum is above carbon. So metals present above carbon, they cannot be displaced by the carbon. तो अगर कार्बन इसको डिस्प्लेस ही नहीं करेगा तो इसको जितना मर्जी कोयले से हीट कर लो, कार्बन से बर्न कर लो, it will remain Al2O3. So then how can you get rid of this oxygen if you want pure aluminum? You need to do electrolysis of aluminum oxide, and that's exactly what we do
when you get want to have like aluminum from aluminum oxide. Just a second hyperbolic. Now we have iron. Just underneath carbon, we have iron. Iron का और होता है Fe2O3. Since iron is present below carbon, do you think iron can be displaced by the carbon here? Can carbon displace iron? Yes, Zoya? Yes, can. because carbon is more reactive. And that's exactly what we do when we extract iron from its ore. We heat it with the carbon because that is a cheaper method. Electrolysis, कल मैंने बताया था, it is good. It gives you good yield, purify yield, but the disadvantage is it is really expensive method. So any अगर वो कोई भी पूछ ले, any metal present, for example, X is above carbon or between sodium and calcium, name the method and explain why. So it should always be electrolysis because only the current can give you can get rid of this oxygen. Other than that, carbon cannot help you in this regard. Bauxite is an impure form of aluminum. The formula is Al2O3. Yes, question किसने पूछना था? Describe how aluminum is extracted from bauxite. Include ionic equations. Reaction at each electrode. तो अभी मैं description में नहीं जा रहा. देखो aluminum oxide होती है. Metal oxides room temperature पे क्या होते हैं? Are they solid, liquid or gases? All metal oxides are, अभी हमने उसमें पढ़ा था acid basis वाले chapter में. All metal oxides are solids, liquid or gases. क्या होते हैं यार? Metals क्या होती है room temperature पे? ऐसे तो ना करो यार, ऐसे तो ना करो. Metals are solids, liquid or gases. भाई metal oxide solid होते हैं. तो aluminum oxide तो solid है, इसकी तो electrolysis ही नहीं हो सकती. तो फिर हम इसको क्या करेंगे? हम इसको हीट करेंगे to melt it. But the problem is, it is an ionic compound, have a very high melting point. इसका melting point बहुत high है. So to decrease the melting point, we add a chemical called cryolite. Cryolite acts as a catalyst. It decreases the melting point of aluminum oxide. Initially, it was 18 or 1900 degrees Celsius. If you add this aluminum oxide into cryolite, it melts at a lower temperature, almost around 800 or 900 degrees Celsius. तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि why do we add cryolite? To lower the melting point. By the way, ये मैं आपको extraction of metals पूरी हम metals वाले chapter में भी करेंगे, but यहाँ पे आ गया तो just a discussion because this is basically from electrolysis as well. Now you have molten aluminum oxide. You pass the current through it, you will get ions. तो इसमें क्या ions निकलेंगे? Definitely you'll get aluminum ions and oxide ion. यही निकलेंगे ना भाई? ऐसा ही है ना? Aluminum के साथ 2 है तो यहाँ 2 लिख लिया, इसके साथ 3 है तो यहाँ 3 लिख लिया. So basically you'll be having these ions. Nile ऐसे ही है. I find everyone. Now you can easily predict the equation at anode and at cathode. Molten का तो सबसे आसान है. Anode is positive, attract the anion. So what anion do we have? Which anion? We have oxide ion. So what is the elemental form? It is oxygen. How do we balance? Let's put 2 here. 1 oxygen will lose 2 electrons, 2 oxygen will lose 4. So this is the equation at anode that you will experience C at while the electrolysis of aluminum oxide molten. Cathode attract cation. The only cation is Al3 plus. It will change into Al. So how many electrons will it accept? The same electron as equal to the charge on it. So these are the equation at anode and cathode, and I think that this is exactly what the examiner wants you to write for literally 5 marks. The whole process. I think I described the process as well. Aluminum oxide solid होता है, तो first आप उसको crush करोगे, powder बनाओगे, and since इसका melting point high है, so you add this into cryolite, which will lower the melting point, and at 800 degree, and once it has low melting point, you then take it to the container with the graphite electrode, and when you put it in the graphite electrode, यहाँ पे एक और बड़ा problem आएगा. अभी बताता हूँ क्या आएगा. हाँ, बल्कि अगला question भी उसी का. So जब उसको आपने मेल्ट किया, उसमें से करंट पास किया, तो you got these oppositely charged ions. They will be attracted toward the respective electrode, and they will get oxidized and reduced respectively. Yes, Zoya. Sir, the oxygen in anode, does it further react with carbon? Yes, Dr. Zoya, you know for the reaction, and you're very smart, I know. So now here, another reaction will take place, and that's exactly the next question. Why anode has to be replaced? Now I want everyone to look at this reaction. Imagine you have this tank right there, and we have this anode made up of carbon, and this cathode also made up of carbon. Right, and you know that we have this whole electrolyte, which is molten or aqueous,
This is positive, this is negative, but do not forget this positive is made up of graphite, which is carbon. This negative is also made up of graphite, which is carbon. So now you have all aluminum ions here and all oxide ions here. We know that all oxide ion will be attracted toward anode and aluminum ion attracted toward cathode. Now, as you know, बहुत important चीज सब लोग सुनेंगे गौर से. You all know that electrolysis happens at a very high temperature. अच्छा छोड़ें electrolysis को. Imagine you are driving a car. You know the exhaust of the car called silencer in our language. I don't know उसको English में क्या कहते हैं. जहाँ से उसकी स्मोक निकलती है, धुआं निकलता है. वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है नाइल? लड़कों से पूछते हैं, इनको जरा इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है. तो सिलेंसर किस चीज का बना हुआ है नाइल? मेटल। आई मीन स्टील का बना हुआ होता है. स्टील का बना हुआ होता है. ओके, इमेजिन यू रिप्लेस दैट सिलेंसर विद वुडन मटेरियल. किसी वुड का बना दो, लकड़ी का सिलेंसर बना दो. तो व्हाट वुड हैपन टू दैट सिलेंसर आफ्टर वन ड्राइव? आप लॉन्ग ड्राइव पे गए, इस्लामाबाद बहरा इंटरचेंज. तो डू यू थिंक यू विल हैव द सेम सिलेंसर attached when you will reach Behra, or do you think उसको प्रॉब्लम हो जाएगा उस वुडन सिलेंसर का? नो सर, प्रॉब्लम हो जाएगा। It will be burned off, क्योंकि जैसे उसे हाई टेम्परेचर पे स्मोक निकलेगी, वो जो सिलेंसर है अगर आप उसको स्टील के बजाय लकड़ी का बनाओगे तो इट विल बी बर्न्ड ऑफ. यहाँ पे प्रॉब्लम बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगाना है हमने. Now we know that carbon is a combustible material. Carbon is a combustible material. यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन गैस बन रही है. At a very high temperature, oxygen is produced since oxide ions are losing electron to form oxygen. Now, this oxygen produced, very interesting, this oxygen produced will react with the graphite anode. The very oxygen produced will react with the graphite anode to get you carbon di. So, जो anode होगा, that will be burned off to get you carbon di or carbon mono. So, that's why we have to replace the anode after regular intervals. कैथोड पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा. कैथोड पे तो सिंपल एल्यूमिनियम जा रही है, डिपॉजिट हो रही है. बट एनोड पे हमें हमारे पास ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, एंड दैट ऑक्सीजन गैस विल बर्न द कार्बन एनोड and to produce carbon di and carbon mono, and that's why we have to replace it after regular intervals. Now the question is, why can't we use platinum if carbon is combustible? So why can't we use platinum? Ifa? Why can't you use platinum? Expensive? भाई आपको आंसर आते हैं ना सबको. भाई प्लाटिनम इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि बहुत महंगी है. देखो मेरा इंग्लिश में स्टार आया था तो मैं महंगी लिख देता. अब पता नहीं मंगनी लिख दिया कि महंगी लिख दी है. महंगी है, ठीक है. So explain why anode has to be replaced regularly, as oxygen produced at anode will burn off the graphite anode. भाई इस लॉजिक समझ आइए. आमना, शामीन will burn off the graphite anode to CO2 or CO. So anodes has to be replaced. Make sense, everyone? For 2 marks. So you need to specify that oxygen produced, it will react, and it will react to form carbon di and carbon mono, so it will be burned off, and that's why you have to replace it after regular intervals. Any question, please? No question? Thank you. So, when rods of zinc and copper are placed in a dilute sulfuric acid as shown, electricity is generated. Generate हो रही है. Subhanallah. Now यहाँ पे थोड़ा सा different चीज है. जरा सुनेंगे सब लोग. मजा आएगा आपको. You have zinc rod here, and you have copper rod here, and you have dilute sulfuric acid as electrolyte, H2SO4. Dilute है तो मतलब aqueous है. Write the ionic half equation occurring at zinc rod. No, उसने ये नहीं बताया कि एनोड या कैथोड. वो कह रहा है zinc rod. We have to decide which one is anode and cathode. For this, again, I want you to, check the reactivity series. The reactivity series is extremely important. So potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, and then you have carbon, and then you have zinc, iron, lead, and then you have hydrogen,
and then we have silver and gold. Sorry, copper, silver and gold. यही रिएक्टिविटी सीरीज जिनको याद नहीं हो प्लीज उसको कॉपी कर लें, मैं भी आपको, मैंने कहा आप सबको याद होगा इसका, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. सो इसका मतलब टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है. द वन ऑन द टॉप इज मोस्ट रिएक्टिव, राइट? दिस इज मोस्ट एंड दिस इज लीस्ट. तो हिंट ये है कि जो मोस्ट रिएक्टिव होता है दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन against the less reactive. So look at zinc here in the reactivity series. Where is zinc? Zinc is right here. Where is copper? Copper is right here. So which is more reactive, zinc or copper? Which is more reactive? Of Zinc. course, zinc. So zinc is more reactive. It will lose electron more easily. So anything that lose electron easily here will behave as anode, because we know that anode पे तो electron lose ही होने. तो flow of electron क्या होगा? From zinc to copper, तो zinc will be your anode. भाई बात समझ आ गई सबको? फातिमा आपको भी आ गई समझ? Right? Okay. So this will be your cathode. Now it is very easy for us to predict the ionic equation, because you see we have ions, it will produce hydrogen ions, it will produce sulfuric acid will produce H plus ions and sulfate ions, and since water hai to H plus ion and OH ion. Anode attract anion. So which anion do you think it will attract? Which anion? Hydroxide ion. So zinc क्या है? Zinc is anode. तो क्या होगा यहाँ पे? 4 hydroxide aqueous will give you 1 oxygen, 2 water. भाई ये तो कितनी बार ये इक्वेशन लिखनी है हमने, कितनी बार, इंशाल्लाह पेपर में भी आएगी, एंड आई नो आप सब लोग इसमें फुल मार्क्स स्कोर करेंगे. यस, सबने लिख लिया? प्लीज से यस. अब कॉपर की लिख लेते हैं. कॉपर पे क्या जाएगा? कॉपर अट्रैक्ट cations, and the only cations we have hydrogen ions. So I would write 4 hydrogen ions. You know why I am writing 4? Because 4 electrons यहाँ से आ रहे हैं, and you will get 2 hydrogen gas. You'll get another 2. So literally 4 marks for the exact same equation which we have wrote, I think, trillions of times. Okay, now the copper rod was replaced by the iron rod. अब उसने कहा कि इसको आप iron से replace कर दें. Copper नहीं, it's no more a copper but iron, right? Now suggest the change, if any, in the intensity of light emitted from the light bulb. देखो यार, यहाँ से करंट जा रहा है, एनोड से करंट जा रहा है, और कहाँ पे जा रहा है? कैथोड से. लेकिन उसके रास्ते में हमने लगाया हुआ लाइट बल्ब. अब जैसे ही जितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतनी स्पीड से इसकी इंटेंसिटी लाइट बल्ब की ज्यादा होगी, एंड इट विल ग्लो मोर. और उसकी इंटेंसिटी डिपेंड किस पे करेगी? एनीवन इन द क्लास? Which factor will decide the intensity of the flow of electron between the two metals? Give me the hints. Give me the answer, everyone. How will you change the intensity of the light? Which factor is laser metal? Okay. Anyone in the class? हमने कॉपर को रिप्लेस किया है. Look, we replace copper with a metal present next to zinc. तो मुझे बताएं कि द डिफरेंस, पहले रिएक्टिविटी का ये डिफरेंस, देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ रिएक्टिविटी. अब रिएक्टिविटी का नेग्लिजिबल डिफरेंस है. तो अब रिएक्टिविटी का डिफरेंस पहले से कम हुआ या ज्यादा हुआ? डिफरेंस कम हुआ या ज्यादा हुआ? बता दो यार. डिफरेंस डिक्रीज हुआ. इसका मतलब द डिफरेंस ऑफ जिंक एंड आयरन इज नॉट दैट मच. तो ये उसके अगेंस्ट बहुत जल्दी से लूज नहीं करेगा, और वो भी गेन नहीं करेगी, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम है, ना होने के बराबर डिफरेंस, बिकॉज दे आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू ईच अदर. सबसे ज्यादा लाइट इंटेंसिटी होगी when you attach potassium at one end and gold at other end. Potassium will lose most quickly and gold will accept. So the huge amount of the flow of electron will be very fast. जैसे जैसे आप गैप कम करते जाओगे उनकी इंटेंसिटी भी कम होगी. So if you replace iron, the intensity would be low. बेटा उधर ले जाओ इनको. Less होगी as the difference of reactivity decreases. The difference of reactivity between iron and zinc, I mean, as the difference of reactivity between zinc and iron is less compared to zinc and copper. Make sense, everyone? भाई जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी इंटेंसिटी करंट फ्लो की ज्यादा होगी. जितना डिफरेंस कम,
intensity is also less. So I want everyone to complete these remaining questions. Extremely important. कल भी इंशाल्लाह हम worksheet करेंगे, a very similar worksheet tomorrow as well, and then day after we'll be doing MCQ questions, and Saturday will be the test from acid basis salts and this very electrolysis. Any question? No question? Chalo, thank you so much. Yes, Aipa. Allah Hafiz. Yes, सर मैंने भी स्टडी किया हुआ एसिड बेसिस